Hello everyone. In today's class, we will discuss about water harvesting techniques. So, there are several techniques are available for the water harvesting. For the runoff water harvesting, there are short-term runoff water harvesting technique, long-term water harvesting techniques. So, short-term water harvesting techniques are like contour bund, semicircular hoop, trapezoidal bunds, etc. So we will see one by one. So in contour bund, contours are constructed on the contours, and in contours की length होगी around 10 to 100 meters and height is 0.3 to 1 meter तक होगी. एंड इसका जो साइड स्लोप होगा ये वेरी करेगा, डिपेंड करता है किस तरह की रिक्वायरमेंट है. एंड जो हाइट ऑफ बंड है, साइड स्लोप वेरी करता है एज पर रिक्वायरमेंट, एंड हाइट ऑफ बंड डिपेंड करता है कि जो अपस्ट्रीम एरिया उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है. सो बेसिकली द वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन दीज टू बंड्स. सो ये जो एरिया है बिटवीन टू बंड्स ये होल्ड करता है सरफेस रन ऑफ को एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सॉइल मॉइस्चर. एंड जो बंड्स हैं इनके साइड में जनरली ग्रो दी क्रॉप्स. Now semicircular hoops. So semicircular hoops are this type of structure consists of earthen embankment imparted constructed in shape of semicircle. Semicircular shape के होंगे एंड इनके टिप से जब ये earthen embankment फिल हो जाएगा एंड दिस वन विल ऑल्सो फिल, इसके बाद में इससे वाटर नेक्स्ट की साइड में जाएगा, डाउनवर्ड साइड मूव करेगा एंड सिमिलरली इनके फिल होने पे इन नीचे वाले हूप्स में ट्रेवल करेगा. सो इसमें जो मैक्सिमम वाटर कलेक्ट होता है वो होता है जो हूप्स हैं ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ के इक्वल एंड एक्सिस वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. नाउ दिस सेमी सर्कुलर हूप आर ऑलवेज अरेंज्ड इन द स्टेगर्ड फॉर्म. इस तरह से जो भी अरेंजमेंट होगा दैट इज नोन एज द स्टेगर्ड फॉर्म, सो दैट द ओवरफ्लोइंग वाटर फ्रॉम द अपर रो कैन इजीली इंटरप्टेड बाय द लोअर रो. एंड द हाइट जो है उसकी वेरी करती है 0.1 टू 0.5 मीटर एंड इसका रेडियस होता है 5 टू 30 मीटर. एंड ये स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं फॉर इरिगेटिंग दी ग्रासेस, फोर्डर्स और श्रब्स एंड ट्रीज के लिए. नाउ ट्रेपेजॉइडल बंड्स. सो ट्रेपेजॉइडल बंड्स आर सिमिलर टू दी, जो इसका अरेंजमेंट होगा इट्स सिमिलर टू सेमी सर्कुलर बट इट कवर्स मोर एरिया एज कंपेयर टू सेमी सर्कुलर. एंड दीज आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, जो ट्रेपेजॉइडल बंड है इन्हें भी कंटूर्स पे प्लेस किया जाता है, कंटूर्स अलोंग दी कंटूर्स ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. सो these bunds are also consist of earthen embankment constructed in shape of trapezoids. and similarly जैसे इस semicircular hoops के केस में जो अपर रोज थी उसके सेमीसर्कुलर हुप से वाटर ओवरफ्लो के डाउनवर्ड मूव कर रहा था, देन डाउनवर्ड नेक्स्ट रो फिल होने के बाद में उससे भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट रो के सेमी सर्कुलर हुप्स को फिल कर रहा था, फीड कर रहा था. सिमिलरली इट हैपेंड इन केस ऑफ द trapezoidal bunds. So the runoff water they'll take from watershed is collected into covered area and excess water जो है वो फ्लो होकर के नीचे वाले बंड्स में चला जाएगा. नाउ ये जो सेमी सर्कुलर बंड्स हैं ये यूज होते हैं हाई इंटेंसिटी रेनफॉल वाले एरिया में. क्यों? क्योंकि हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है उस केस में जो रन ऑफ है इट विल मोर एंड रन ऑफ ज्यादा होने से या कंसंट्रेटेड फ्लो जो है वो इरोजन कॉज करेगा. रन ऑफ तो होगा ही, साथ साथ में इरोजन भी कॉज करेगा. एंड यदि कंटूर बंड्स बनाते हैं तो उसे भी कंसंट्रेटेड फ्लो डैमेज करेगा. सो इन दिस केस we use the trapezoidal bund and this technique is widely used for the crops, grass, shrubs, trees etc. जैसे सेमी सर्कुलर हुप क्रॉप इरिगेट करने या ग्रासेस के लिए यूज कर रहे थे, सिमिलरली ट्रेपेजॉइडल बंड्स भी यूज करेंगे. नाउ ग्रेडेड बंड. सो ग्रेडेड बंड्स आर referred as the contour bunds. So graded bunds we have already discussed in the erosion control measures. So these graded bunds are also earthen और स्टोन एम्बैंकमेंट जो कि कंस्ट्रक्ट होते हैं ऑन अ लैंड विथ स्लोप 0.5 to 2% का स्लोप होगा उस केस में कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड जो डिजाइन है ग्रेडेड बंड की ये थोड़ी कंटूर बंड से डिफरेंट होती है. इन केस ऑफ कंटूर बंड वी कंस्ट्रक्ट दी बंड्स ऑन दी कंटूर, व्हाइल इन केस ऑफ ग्रेडेड बंड
The first we prepare the land, we provide some slope or grade to the land, and then we construct the bunds. So they used as an optional where rainfall intensity and soil are such that runoff water discharged from the field can easily intercepted. एंड द एक्सेस इंटरसेप्टेड और हार्वेस्टेड वाटर जो है इसे डाइवर्ट कर देंगे टू दी नेक्स्ट फील्ड थ्रू चैनल एंड इसकी जो हाइट होगी वो होती है 0.3 to 0.6 meters एंड द डाउनस्ट्रीम बंड कंसिस्ट ऑफ विंग टू इंटरसेप्ट द ओवरफ्लो फ्रॉम upstream bunds. And due to the configuration of graded bund look like open-ended trapezoidal bunds, and that's why sometimes these bunds are known as the modified trapezoidal bund. So a graded bund को sometimes modified trapezoidal bunds भी कहा जाता है because of the wings. And these bunds are and this type of bunds for water harvesting is generally used to irrigating the crop. Now rock catchments. So rock catchments क्या होते हैं? In rock catchments, the rock surface से वाटर को कलेक्ट करते हैं. कोई हिल्स है, उन हिल से जो भी वाटर रन ऑफ हो रहा है उसे कोई एक छोटा साइड में इम्बैंकमेंट बना के डाइवर्ट करते हैं in another water storage structures, and this water is used for the either domestic use or the irrigation purposes. So जो भी रन ऑफ ड्रेन होगी टुवर्ड्स दी लोएस्ट पॉइंट के साइड जाएगा. सो लोएस्ट पॉइंट पे स्टोरेज टैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड उस स्टोरेज टैंक में वी स्टोर दी हार्वेस्टेड वाटर. सो ऑफ रॉक कैचमेंट वेरी करता है 100 स्क्वायर मीटर टू 1000 स्क्वायर मीटर एंड जो वाटर कलेक्टेड वाटर है इट इज यूजफुल फॉर द डोमेस्टिक एंड इरिगेशन पर्पसेस. नाउ ग्राउंड कैचमेंट्स. सो इन ग्राउंड कैचमेंट जो ग्राउंड है या जो डिप्रेशन वाला पार्ट है इसे कॉम्पैक्ट करके प्रिपेयर करते हैं एंड कॉम्पैक्टेड जो डाउन डिप्रेशन है इसमें स्टोर करते हैं वाटर एंड इस स्टोर्ड वाटर को डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स दी स्टोरेज टैंक वाया दी चैनल. सो चैनल एज वेल एज जो ग्राउंड है ये दोनों को कॉम्पैक्ट करके रखेंगे सो दैट इसमें सीपेज लॉसेस ना हो, वाटर परकोलेट ना हो या किसी भी तरह के लॉसेस कम हो. एंड ग्राउंड कैचमेंट समटाइम्स नोन एज द रोडेड कैचमेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रन ऑफ इंड्यूसमेंट. तो जो ग्राउंड वाटर कैचमेंट्स हैं ये ट्रेडिशनली यूज हो रहे हैं ऑलमोस्ट 4000 सालों से, जो कि यूज होती है साउथ इजराइल में फॉर द drought tolerant crops and some drought tolerant spices like pistachio depends on the such harvested water are